Hi, welcome to DCA. So today, many of you, I'm talking about the serious aspirants, those who are graduates might have appeared for the UPSC civil service examination. Right, so it's not about how was the exam. I'm not going to discuss how exactly was the exam. One thing I would like to discuss here is what is the trend going on in UPSC 2020. जो भी इस साल एग्जाम हुए हैं by the UPSC, like UPSC has conducted NDA exam in CDS 1 2020 as well as the UPSC civil services exam, right? तो after corona era में जो UPSC ने कराया, right, that was delayed or something. So how the trends has been changed and what is the recent one? What are the surprises? Is there anything abnormal? Right? Of course, UPSC always keeps it unpredictable, but we are just discussing, was there really some surprise? Or can we expect more surprise in CDS exam or CAPF exam? So graduates who might be planning for CDS or CAPF can have a look over this, right? Even those aspiring for NDA, right? जो बच्चे NDA के हैं, CDS के हैं, CAPF के हैं, आप इस सेशन से अपने दिमाग में थोड़ी बहुत assumptions ले सकते हैं, so that you can be ready for the worst, right? I repeat, you should be ready for the worst because anything from everything is going to be asked this year. So let's start. The theme of the session is, should we believe in trends, the UPSC trends? जनरली क्या होता है ना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, रीसेंट यूपीएससी का माइंडसेट देखते हैं, रीसेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ग्रेजुएट्स देखते हैं. एज द नंबर ऑफ सीट्स, देखो आप, नंबर ऑफ सीट्स इन सिविल सर्विस हैज बीन डिक्रीजिंग डे बाय डे, लास्ट 2 सालों में घटी रही है. इन CDS it has been decreased as well, right? CAPF में भी आपको लग रहा होगा कि it is becoming obsolete because 1-2 साल में एग्जाम शायद मर्ज होने जा रहा है, but there is no official notification yet, right? अगले साल होगा, अभी तक तो यही न्यूज़ है, right? So I tried to find out some stats जो आज जो सिविल सर्विस का पेपर हुआ उसके बेसिस पे I would like to discuss some stats which may be helpful for you. It's again, I can say it may be because nobody is sure what UPSC can do. We can just discuss. मुझे जो लगता है वो मैं शेयर कर सकता हूँ. It may be helpful, may not be helpful. That is all again your subject of interpretation, or all depends on your personal wisdom. What to learn from the UPSC Civil Service Exam 2020 and the NDA trends? So the biggest thing I will talk about the surprises. Physical geography. Now if you look upon the civil service exam paper which was conducted today as well as the NDA 2 2020, that means NDA 2020 जो 6 सितंबर को हुआ, the physical geography was more or less missing. When I say missing, देखो generally what you expect from any UPSC the paper, आप इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, फिर उसके बाद वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो यू बिलीव दैट एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन शुड बी देयर, बट नीदर इन सिविल सर्विसेज. इसमें भी जो फिजिकल ज्योग्राफी से थे, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी वाले, एक ही क्वेश्चन था. एज वेल एज इन एनडीए फिजिकल ज्योग्राफी वाज मिसिंग. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम ये एनडीए की हिस्ट्री में आफ्टर 2010, बिकॉज उससे पहले का पेपर मैंने देखा नहीं है, 2002 से पहले वो 10th लेवल पे होता था, राइट? तो लास्ट 10 ईयर्स में, राइट, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट 2006, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आए. यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, बट द ट्रेंड जो होता था वो 9 to 10 और 11 क्वेश्चंस के होते थे. एंड जैसे कि हमने अपने कोचिंग्स में भी या बुकलेट्स में भी वी कवर फिजिकल ज्योग्राफी एग्जॉस्टिवली, बट वो आया नहीं, राइट? हम तो तैयार थे एंड बिकॉज वी बिलीव इन ट्रेंड्स कि भाई ट्रेंड के हिसाब से ये आता है तो अपने को ये स्ट्रांग रखना है, बिकॉज दैट इज साइंटिफिक इन नेचर, बट आया नहीं, राइट? सो दिस वाज अ सरप्राइज इन बोथ द पेपर. इवन इन सिविल सर्विस टुडे यू कैन फाइंड आउट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम एग्रीकल्चर, environment, and you can say some analytical facts. You cannot say that straightforward questions are there. They are not going to ask you what is application of steel. They have asked where is the application of steel slag, which is ये बड़ा मुश्किल काम है. आप slag जानते होंगे, steel जानते होंगे, but a steel slag का application कहाँ it is very difficult. You might be aware of the minerals, but they has asked major minerals. If you talk about NDA exam, NDA 2019 के लास्ट में they have asked which of the following is metallic mineral. यहाँ पूछ रहे हैं which of the following is major mineral as per the government, मतलब official reports of the government, right? So it's all none of the coaching can cover these things exhaustively. There are huge number of things which has to be covered if you go by the paper. मतलब I personally believe, मतलब this is again a personal thought actually, nobody can go beyond 50 question out of 100 in one go.
रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, आपको एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा. सो सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू लर्न एलिमिनेशन. आप फंडामेंटली स्ट्रांग रहे, अपने बेसिक्स को ठीक रखें, बट विदाउट एलिमिनेशन यू कैन नॉट स्कोर टू मच, राइट. सीडीएस का पेपर ऑफ कोर्स थोड़ा सा आसान होगा, सिविल सर्विस ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी इज डिफरेंट बिकॉज वहां एस्पिरेंट्स अलग है, बट जो ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से आपको एलिमिनेशन जरूर सीखना पड़ेगा. सेकेंड, द पॉलिटी एंड हिस्ट्री क्वेश्चंस दे वेर मॉडरेट्स, इजी भी कह सकते हैं बिकॉज सम क्वेश्चंस इन एनडीए वाज इजी फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री. एनसीईआरटी से भी थे, इजी भी थे. In civil service, even sometimes we believe that history is always tough for civil service as well, but there were around 3 to 4 questions of history and around 7 to 8 questions of polity which were quite easy. जो एक आम आदमी स्पेक्ट्रम पढ़ के या लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, बेसिक अवेयरनेस है, मे बी आपने एनसीईआरटी पॉलिटी भी पढ़ा हो तो शायद आप कर सकते थे, राइट. सो दैट मीन्स कि अपने को ये लर्न करना है कि वी शुड नॉट स्किप मॉडर्न और पॉलिटी अपने को ठीक ठाक करना है. एंड बिलीविंग इन पॉलिटी में आप फोकस जरूर करना है डीपीएसपीज पे, फेडरलिज्म पे, एज वेल एज जो प्रीम्बल वाला पार्ट है स्टार्टिंग में, राइट. एंड ऑफ कोर्स द लोकसभा राज्यसभा काइंड ऑफ थिंग्स, दिस आर क्वाइट बिकॉज आजकल पॉलिटिकल हलचल बहुत ज्यादा है, तो इससे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी आए और दिस वाज इजी हियर. Coming to the science tech, the science tech in civil service is of course dynamic or application. So if I simply use the word science, that will be wrong because it's basically application of science. In CDS we talk about ultrasonic, infrasonic. Here we talk about, the question asked is visible light communication, right? It's completely a distant apart. You can say it's beyond imagination that when you are studying the terms like dolphins produce ultrasonic or infrasonic, and civil service they are asking what are the application, which of the following is correct about visible light communication. So ऐसे terms पूछे गए which was of course typical. और दूसरी चीज कि अगर आपको एक चीज टर्म सुना भी हो तो भी आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने चाहिए to eliminate. So one key point is that you have to, in fact we have to learn elimination. एलिमिनेशन का मतलब आप बेसिक से स्ट्रॉन्ग रखेंगे, देन यू कैन एलिमिनेट कि नो दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली रॉन्ग. देखो यूपीएससी नोज दैट यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, एंड यूपीएससी इसी माइंडसेट से पेपर सेट करती है इवन फॉर द सीडीएस जीएस कि वी शुड मेक श्योर दैट नन ऑफ द स्टूडेंट कैन क्रॉस 60 और 50 प्लस स्कोर. इट्स टफ. आपके पेपर में सीडीएस में आसान क्या होता है, सीडीएस में इजी क्या होता है, साइंस, राइट. जो बेसिक ट्रेंड्स है, अगर साइंस के क्वेश्चन आते हैं दे आर फ्रॉम द बुक्स. जो सिविल सर्विस में ऐसा नहीं है, तो साइंस वाले में आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जाता है, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी वगैरह पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. नाउ वन मोर थिंग दैट इज इकोनॉमिक्स. इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स इन सिविल सर्विस पेपर, इकोनॉमिक्स भर के आई, मतलब कम से कम 10 प्लस है और एप्लीकेशन है. The questions were like if 1,000 rupees has to be withdrawn from some account, what is the impact on economy, kind of questions like that. So that is completely analytical in nature. You cannot say, and I cannot claim that this question was being taught in class or something. And in fact nobody can teach you everything. यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि how economy flows takes place, and the only option is you have to eliminate. Okay, this is wrong, B is wrong, C looks to be correct, D is slightly correct, you have to go for the best one, right. ये आपको बहुत जरूरी चीज है. इनफैक्ट दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल, राइट. अपने को क्वेश्चंस टफ करने हैं, बिल्कुल करने हैं, और एलिमिनेशन सीखना है, राइट. अपने को क्वेश्चंस के बहाने नई चीजें सीखनी है बिकॉज द जिस्ट ऑफ द स्टोरीज दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट. हम 20 नंबर की तैयारी क्यों करें, अगर हम सीडीएस या सीएपीएफ की बात करते हैं, हम कट ऑफ की तैयारी क्यों करें. We have to try for the maximum, and in order to maximize the things we need to make sure that we are covering polity, history as well as economics along with the science, which can be our strong point, right. You cannot eliminate everything. Don't try to just cross the hurdle because hurdles are going higher day by day. If you look over the stats of the exam, right, even in NDA if you talk about the questions were majorly from the Indian geography, right, and of course science tech was easy here because what is difference in UPSC, NDA and CDS and civil services? Although UPSC conducts, one is the maturity level. Second, NDA is the only UPSC exam where syllabus is defined. In CDS, in civil services, in CDS as well as in CAPF, no syllabus is defined. They can ask anything from everything.
and this is what we need to learn, right? So keep your morale high, keep your spirit high, practice as much as possible. आप जितना कवर कर सकते हैं कर लीजिए, because benchmark is always going to be higher nowadays, and that's the learning from the exam conducted today, as well as what we have looked over in CDS1 as well as NDA 2020 paper. Hope this session may give you a brief insight. Last but not the least, I'm not saying this thing to make you frightened or something. ये डराने वाली बात नहीं है. It's nothing to be feared of. आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें. It's all about luck. Maybe polity question can be tough, maybe history can be tough, right? So in case if you want that there should not be any excuse after that, okay, my paper went bad because I skipped this portion. We have to cover as much as possible. You should be ready to paint a white canvas with all the bright pictures of the different subject, so that complete image could be reflected in your OMR sheet. Thank you. All the best.